This is the second topic of Unit 2nd of Information Practices. The name of topic is Interactive and Script Mode of Python. In a previous class, we had already learned about Python, its features, its limitation. Now in this class, we will discuss about two different mode of Python, which is interactive and script mode. So let's start the class. Working in Python. Before we start working on Python, we need to install Python in our computer. There are multiple distributions available today. Student, here three distribution available. First, default installation. Second, Anaconda. Third, Spider or PyCharm. First, default installation available from www.python.org website. It's called CPython installation and comes with Python interpreter, Python IDLE and package installer PIP. Second, Anaconda Python distribution. Anaconda Python distribution is one such highly recommended distribution that comes with preloaded many packages and libraries like NumPy, SciPy and Panda etc. Third, other popular IDEs like Spider, PyCharm etc. Spider IDE is available as a part of Anaconda. Student, in first means default installation www.python.org पर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको फर्स्ट लिंक में पाइथन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जहां से आप उस पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। हम डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे ही वर्क करना सीखेंगे। द रीज़न इज़ दैट पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन आइडियली एंड पैकेज इंस्टॉलर को सी पाइथन में अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तीनों चीज़ें मीन्स इंटरप्रेटर, आइडियली एंड पैकेजेस आपको सी पाइथन में ऑलरेडी गिवन होते हैं। एंड इन एनाकोंडा एंड स्पाइडर और पाइथन में हमें इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। हम हमारे जो भी प्रोग्राम आगे देखेंगे सी पाइथन के थ्रू ही हम रन करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, once you have Python installed on your computers, you are ready to work on it. You can work in Python in different ways. So working modes in Python. After Python installation, we can start working with Python. In Python, we can work in two ways. First, interactive mode, which is also called immediate mode, and second, script mode. So let's discuss it one by one. What do you mean by interactive mode and what do you mean by script mode? Interactive mode is a command line shell. Command line shell means in interactive mode, instructions are given in front of Python prompt. Okay. Now, interactive mode is a command line shell which gives immediate feedback for each statement. Means जैसे आप स्टूडेंट लाइन टाइप करोगे प्रोग्राम की आपको इमीडिएट उसका क्या मिल जाएगा फीडबैक while running previously fed statement in active memory. As new lines are fed into interpreter, the fed programs is evaluated both in part and in whole. So still in interactive mode doesn't save commands in from a program and also output is placed between commands. Interactive mode is suitable for testing code. Student interactive mode में आपको instant response मिलेगा आपके प्रोग्राम का। आप प्रोग्राम जैसे ही टाइप करते जाते हो आपको प्रोग्राम का आउटपुट अगर आप इंटरेक्टिव मोड पे वर्क कर रहे हैं तो इमीडिएट आपको फीडबैक या इमीडिएट आपको रिस्पांस मिल जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लासेस में हम पाइथन के प्रोग्राम कैसे टाइप करेंगे इंटरेक्टिव मोड में वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इंटरेक्टिव मोड में पाइथन में कैसे वर्क करते हैं। सेकंड, स्क्रिप्ट मोड।
executing a script from beginning to end. Contrast with interactive mode, C scripting language. Student in scripting mode, Python instructions are stored in a file generally with .py extension and are executed together in one go as a unit. The same instruction are known as Python script or Python program. Student script mode is useful for creating programs and then run the programs later and get complete output. Means आपको स्क्रिप्ट मोड में पूरा लाइन बाय लाइन प्रोग्राम टाइप करना होता है. आफ्टर दैट जैसे आप डॉट पी वाई एक्सटेंशन से सेव करते हो देन आपको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरैक्टिव मोड में डिफरेंस यही है कि आपका इंटरैक्टिव मोड इमीडिएट रिस्पांस देता है एंड स्क्रिप्ट मोड पूरा प्रोग्राम टाइप करने के बाद कंप्लीटली जैसे आपका प्रोग्राम होगा देन आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा. The default distribution CPython comes with Python interpreter. Python ideally means GUI based and PIP which is package installer. Student to work in interactive as well as script mode you need to open Python ideally. So let's see working in default CPython distribution. Student, the default installation of CPython comes with Python interpreter, Python IDLE and package installer. To work in either interactive mode or a script, we need to open Python IDLE. So, to work in interactive mode, follow the process given below. First, click Start button. After that, All Program. After that, Python 3.6.x, then IDLE. आप सबसे पहले अगर आपको इंटरेक्टिव मोड पे वर्क करना है तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और पाइथन जहाँ आपने डाउनलोड किया है जो वर्जन होगा उसका, जैसे यहाँ भी आपके सामने गिवन है 3.6.x, तो आप उसे डबल क्लिक करके उसकी IDLE को क्या करेंगे, ओपन करेंगे. स्टूडेंट, हियर पाइथन 3.6.x इज अ वर्जन. यहाँ पर पाइथन का 3.6.x वर्जन गिवन है. आप वेबसाइट से जो वर्जन इंस्टॉल करेंगे वही डिस्प्ले होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. और क्लिक स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, पाइथन 3.6.x एंड पाइथन कमांड लाइन से भी आप पाइथन या सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन ओपन कर सकते हैं. आफ्टर दैट वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड, पाइथन IDLE. Interactive modes, one command at a time. Student, in a previous video we had already learnt about interactive modes. आपको पता ही है कि इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि इंस्टेंट आपको क्या मिल जाता है, फीडबैक. Python execute the given command and gives the output. In interactive mode we type command at IDLE prompt. स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 3 एंगल ब्रैकेट्स शो हो रहे हैं. So in interactive mode, instruction are given in front of the Python prompt. जो आप एंगल ब्रैकेट से उसी को Python prompt कहेंगे हम. For example, if you type 20 plus 30 in front of IDLE prompt, means यहाँ पे आपको शो हो रहा है जैसे आपने 20 plus 30 लिखा है, command given by user. तो आपको जैसे आप रन करोगे तो इंटरेक्टिव मोड में आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 50. From the above example, you can see then at angular bracket, or we can say that a Python prompt, we have to just give the command to execute and Python we execute it if it is error free, otherwise gives an error. अगर कोई error होगी तो आपको error शो हो जाएगी, otherwise output generate होगा. Student, अगर आपको interactive mode में hello world print करवाना है तो as you can see in this picture, आपको इंटरेक्टिव मोड दिखाई दे रहा है जिसमें 3 एंगुलर ब्रैकेट है और प्रिंट कमांड दी है. प्रिंट कमांड के बाद हमने क्या टाइप किया है, हेलो वर्ल्ड.
जैसे आप हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में लिखते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको तुरंत ही या इंस्टेंटली आपको आंसर मिल जाता है हेलो वर्ल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रिंट इन स्मॉल ब्रैकेट 10 + 20। तो 10 + 20 क्या होगा 30, और प्रिंट कमांड के थ्रू प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा जाएगा 30। आफ्टर दैट 20 - 10 किया, आउटपुट 10। 10 × 20 किया, आउटपुट 200। इन सिमिलर वे 20/10 करेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा 2। आफ्टर दैट a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 40 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। हमने यहाँ प्रोग्राम में कुछ लाइंस टाइप की है। हियर a b c आर द नेम ऑफ वेरिएबल, जिसमें आप c को प्रिंट करवाना चाहते हैं। आप प्रिंट कैसे करवाओगे कि आपका a प्लस बी की वैल्यू ऐड होके किस में आ जाएगी c में। ये इंटरेक्टिव मोड है, दैट द रीज़न आपको जैसे आप सी को प्रिंट करवाते हो आपको वैसे ही क्या मिल जाएगा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। आपकी आउटपुट स्क्रीन पर 70 मीन्स द एडिशन ऑफ 30 + 40 डिस्प्ले हो जाएगा। स्टूडेंट 3.6.x लिखा हुआ है, उस x की प्लेस पर पाइथन का वर्जन नंबर शो होता है जब आप पाइथन को वेबसाइट से डाउनलोड करते हो। फॉर एग्जांपल 3.6.2 इस टाइप से। x shows the version number, or we can say that latest version number of Python. Conclusion is that you got instant result in interactive mode.